So in this first chapter of Introduction to Business Environment, we have done, let me recapitulate the same. We have done the meaning of business, the meaning of environment, and the meaning of business environment, okay? The definitions of business environments, then what are the features of business environment, why it is so important to study business environment. Okay? Then the most important question in this chapter, what are different types of business environment? So I have told you that business environment is basically of two types, internal environment and external environment. Okay, so anyone can give me, because I'm repeatedly talking about the meaning of both of these type of environments. So any student who can give me the definition of both of these types of environments, like what is internal environment and what is external environment? Okay, let me ask Jaspreet Kaur. Yes, Jaspreet, please let us know what is meant by internal environment. Yes, Jaspreet. Are you there in the class? Yes, Ma'am, go ahead. question is समझ में आया, repeat कर. I am asking you what is meant by internal environment. Internal environment जैसे मैम जो internally अंदर ही हो, कि जैसे कंपनी है उसके अंदर जो environment है, का structure हो गया, जैसे कि उनका काम करने का style कैसा है. Are these environmental factors controllable or uncontrollable? मैम ये कंट्रोलेबल है, क्योंकि इंटरनली है ना, इसका बाहर के लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हम अंदर ही कंट्रोल कर सकते हैं इसे. Okay, Jaspreet, right. So internal environment means those factors which exist within the boundary of the business, and these factors are controllable. The examples have been written before you. The values of the company, company का mission, मतलब कंपनी का पर्पस क्या है. मिशन का मतलब होता है द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ दैट बिजनेस. देखिए कंपनी के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी की हायरार्की क्या है, कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है, कंपनी कैसे स्ट्रक्चर करी गई है, व्हाट इज द कल्चर इन द कंपनी, द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, द लेबर यूनियंस, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टैंजिबल रिसोर्सेज हैं, इंटैंजिबल हैं. So all these are a part of internal environment of the company. And since they exist within the business, within the boundary of the business, that means they are controllable. Now I'm going to ask Dipali. Yes, Dipali, what is meant by external environment? यस मैम. मैम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता. Okay. और ये आगे दो टाइप्स का होता है, माइक्रो में और एक मैक्रो. जो माइक्रो होता है ये बिल्कुल ही जो हमारे फॉर्म के बाहर होता है, और इनका ज्यादा इफेक्ट होता है फॉर्म पे. Okay, good. जैसे सप्लायर्स ऑफ इनपुट, कस्टमर्स वगैरह, इनका ज्यादा इफेक्ट है कंपनी पे. Right. और जो मैक्रो पे होते हैं ये इकोनॉमिक होता है, ये तो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है. जो कि इकोनॉमिक गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी वो हमें फॉलो अप करनी पड़ती है, जो भी होता है. Both are uncontrollable, Dipali. Both are यस uncontrollable. मैम. The only difference is that the micro environment has a direct impact on the company, whereas macro environment has an indirect impact. इंटरैक्टिव. Right? So very well said by Dipali, that external environment are those factors which exist outside the boundary of the business and which are uncontrollable. And these can be further of two types, micro and macro. Micro are those which are those external environmental factors which have an immediate and direct impact on the business of the company. Whereas macro environmental factors are those which have an indirect impact on the company. And we have already discussed what are the components of micro and macro. In micro environment, this is the immediate environment. वो environment जो जिसके अंदर रहकर business task अपनी करती है, अपनी responsibilities, अपने roles fulfill करती है, अपनी activities करती है. So the immediate environment, immediate surroundings of the company, like our immediate surroundings, like I being a person, मेरी immediate surroundings कौन हो सकती है? My family, my workplace जहाँ पर मैं रोज जाती हूँ. These are my immediate surroundings. And other my relatives, they could be my they are not my immediate surroundings. उनको रोज नहीं मिलती हूँ. Okay, they are far off. Okay, I meet them occasionally. So these are
this is just a small example I've given you. So my family, my workplace, that could be my immediate surroundings. That could be my micro environment. My relatives, my far off friends, okay, or the general society, they could be a macro environment because they don't directly impact me, okay, and they are far off. Okay, they are not immediately related to me. Okay? So that is called as macro environment. So माइक्रो में आ जाते हैं हमारे सप्लायर्स जो हमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं, suppliers of raw materials, the suppliers of technology, anything. Okay? So then हमारे आ जाते हैं customers. सप्लायर से हम सामान लेते हैं, कस्टमर्स को हम सामान बेचते हैं. Okay? Then हमारी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब वो लोग जिनकी हेल्प से, वो पार्टीज जिनकी हेल्प से हम अपना जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक पहुंचाते हैं. These are marketing intermediaries. Then हमारे competitors, because competitors के actions हमें directly influence करते हैं. So and the public. So these are the components of micro environment. And in macro environment, we have 6 types of environment, as I've told you, 7 basically: political, economic, social, technological, ecological, legal, and international or global. So इनमें से सबसे ज़्यादा important जो है, as I'm telling you since the beginning, that is the macro environment. Okay, so macro environment को ही हम डिटेल में स्टडी करते हैं. We study all these macro environment factors separately in different chapters in our subject. Okay, so this is another way, as I've told you, कि अलग तरीके से हम environment को कैसे classify कर सकते हैं. This one is internal. Okay, the internal environment, जिसमें आ जाते हैं कंपनी के वैल्यूज, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, कल्चर एंड एवरीथिंग. के देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को 3 तरीके में क्लासिफाई किया गया है. माइक्रो मैक्रो में नहीं किया, 3 तरीके से किया गया है. वन इज टास्क एनवायरनमेंट, जो कंपनी का इमीडिएट बाहर वाला एनवायरनमेंट होता है, जिसके अंदर रहकर कंपनी अपनी एक्टिविटीज करती है, जो कंपनी की इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं. देन सेकंड इज सोसाइटल एंड थर्ड इज नेचुरल और फिजिकल. सो दिस इज अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम एक तो इंटरनल एंड जो एक्सटर्नल वाला है उसको हम आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. रादर देन क्लासिफाइंग इनटू माइक्रो एंड मैक्रो, यू कैन क्लासिफाई इनटू टास्क, सोसाइटल एंड नेचुरल. कंपोनेंट्स वो सेम है, बस अलग हेडिंग के अंदर उनको हमने क्लासिफाई कर दिया. सो वी हैव ऑलरेडी डन द मीनिंग ऑफ इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो एंड मैक्रो. So by now we have done the meaning of business environment, the nature, importance, and the types of business environment. Lastly, in this chapter, that what are the challenges? Okay, that business अपनी environment को study करना is very complex. ये हमने इसके features में भी study करा था. That business environment is very dynamic. Environment को study करना is not that easy. It is very complex. Okay. Now, what are the challenges? जो एक मैनेजर के पास है, जो अपने बिजनेस के डिसीजंस ले रहा है, अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहा है. सो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर अहेड ऑफ दैट मैनेजर? सो द वेरी फर्स्ट चैलेंज इज द इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस. सो एज यू नो दैट मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट मतलब बायर एंड सेलर. सो मार्केट तो चेंज होती रहती है कि योर कस्टमर नीड, कस्टमर की प्रेफरेंसेस, उसके डिमांड, दे चेंज एवरी सिंगल डे. So the market keeps on changing. Market में customer की demand, market की composition. Okay, like now if you go way time back, so people they don't have much preference for the Western products. अगर हम आज देख रहे हैं, so आजकल जो है customer demand more of a branded products, more of Western products. So accordingly, मार्केट में उसी तरीके का प्रोडक्ट चलेगा जो कस्टमर को, विच इज बीइंग लाइक्ड बाय द कस्टमर. सो हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कस्टमर की क्या नीड्स हैं. ठीक है, मार्केट में किस तरीके का कस्टमर एग्जिस्ट करता है. लाइक नाउ इफ वी से दैट पीपल दे हैव मोर डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सो या फिर renewable products या nature friendly products, environmental friendly products. So अगर अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से लेबल करके बेचते हो, so the sale would be higher. Okay? So why people have shifted from the conventional tube lights or bulbs to the LED bulbs? Because we say they are energy savers. Okay, so people, they are shifting towards more of environmental friendly products. So market में हमारी किस चीज की डिमांड है? What is the attitude of the customer? किस तरीके का कस्टमर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है? That keeps on changing every day. और मार्केट एक एनवायरनमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मार्केट में कौन होता है? कस्टमर. So
it is very essential to continuously change with the changing needs of the customers, the changing needs of the market. मार्केट में जो है मार्केट की कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, पीपल बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एटीट्यूड एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स. So with this continuous and so frequent change in the market, so it is difficult to study the business environment. So market continuously change होती है, so उससे आपको ये कि environment को continuously study करना पड़ेगा, because the needs and changes, the needs and demands of the customers, they change every day. Similarly, economic conditions. Economic conditions mean the economic status, the economic development of the country, the GDP rates, okay, the various rates which are continuously revised by the Reserve Bank of India. These are economic conditions. So every economy passes through different phases. Okay? कुछ economic cycles होते हैं जिनको कहते हैं boom. I hope सबने सुना होगा. Okay, then recession, then depression, and then recovery. These are 4 phases of economy. हर एक country in 4 phases में से pass करती है. So initially a company जो है, sorry, a country. I'm talking about the country. So initially, if a country is going up, okay, that means it is recovering. When the country is at the highest stage of development, उसको कहते हैं boom. जब डाउन आने लग जाता है, that is called as recession. And वो recession जब बिल्कुल नीचे आ जाता है, the most lowest phase of development, that is called as depression. Okay, so this phase is called as boom phase. और जब economy down जाना शुरू कर जाती है, that is called as the recession. अब जब recession को control नहीं किया जाएगा तो वो एक बिल्कुल lowest phase of development पे पहुंच जाएगी, जहाँ पर country में demand बिल्कुल कम है, लोगों के पास income कम है, sources of income कम है. Okay, so product की demand नहीं है, consumption नहीं है. Consumption क्यों नहीं है? Because लोगों के पास income नहीं है. Okay? That point, country is said to be in depression. डिप्रेशन के बाद जब कंट्री रिवाइव होना शुरू करती है, दैट फेज इज कॉल्ड एज रिकवरी. सो दीज आर द 4 इकोनॉमिक साइकिल्स. एवरी कंट्री कभी जो है इनमें से किसी ना किसी एक फेज पे होती है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सो व्हाट आर दोस इकोनॉमिक कंडीशंस? अब आज के स्टेट पे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो सिर्फ हमारी कंट्री के ग्रोथ रेट पे ही डेवलप नहीं करती, दे आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी फॉरेन जो है ग्लोबल ग्रोथ रेट. So as you can see that Afghanistan में जो crisis आए हैं उसके करके there have been a lot of impact on the Indian businesses as well. So I will give you a very real life example that जो almonds हैं, the rate of almonds, it has gone enormously up. There has been 100% increase in the rate of almonds. Why? Because of these kind of crises in Afghanistan. So see, you can see the economic conditions एक country में जब change होती हैं तो उसका effect दूसरी country के businesses के ऊपर भी होता है. So that is one of the biggest challenge. कि अब चाहे हमारी country, even if our country is in a good phase, our country is either in a boom phase or recovery phase, okay? But still अगर फॉरेन मार्केट में कोई डिस्ट्रप्शंस आ जाती हैं उससे हमारे कंट्री के बिजनेसेस को भी इफेक्ट पड़ता है. सो दीज आर दी 2 challenges under economic and market conditions. Okay, so market conditions में क्या challenge है कि market is not stable, customer की preferences, needs and demands changes every day. Economic conditions का क्या है कि country के जो economic rates, they keep on changing. country का GDP rate, उसका bank rate and everything, they keep on changing every time. They are not frequent. They are not stable, sorry. Okay, and also जो है ग्लोबल मार्केट में भी अगर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस में भी अगर कुछ डिस्ट्रप्शन आती है वो आपके डोमेस्टिक मार्केट को भी खराब कर सकती है. दिस इज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. Then another challenge which I've already discussed under the market, that is customer needs and demands. The needs and demands of the customer, they change every day because of the coming up of the Western culture, okay, or the change in the attitude of the customers, change in the type of the customers. Okay, so there have been a continuous and frequent change in the demands. जिसके करके it is a challenge for a manager to evaluate its environment. Then your competitors. Okay. कस्टमर के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको इफेक्ट करता है वो है आपके कॉम्पिटिटर्स. सो विद द चेंज इन द पॉलिसीज एंड द स्ट्रेटजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, यू हैव आल्सो टू चेंज योरसेल्फ.
So if आपका business बिल्कुल comfortable चल रहा है, you are getting good sales, but because of a disruptive move by your competitor, ठीक है, आपके competitor ने कोई ऐसी like जब Reliance Jio आया था, okay, that was a very big move on the part of Reliance, उसने उसके बाकी सारे competitors को बहुत ज़्यादा effect किया. Okay. Before coming up of the Reliance Jio, the telecom companies, they were running comfortably. There was no as such a problem. Okay, they were running comfortably. They were having good profits. But with the coming up of the Reliance Jio, okay, उन्होंने क्या किया? They had given the services free for the 1 year, for the first 1 year. Okay, so they have been a very big move by your competitor, जिससे करके आपको भी change होना पड़ा. So other companies like Airtel and Vodafone, they also had to change. तो उनको भी चेंज लेकर आना पड़ा because of the big move by their competitor. So that is because of your competitors move, you also have to sometimes change despite of the fact कि चाहे आपका business comfortably चल रहा है. Lastly, new opportunities and threats. Okay. So as I'm telling you since the beginning that the environment is very dynamic. Okay. It changes very rapidly. Okay. So every time जब environment change होता है, it brings in two things. With the change, या तो उस change से एक opportunity मिलेगी आपको. Opportunity का क्या मतलब है? जिसको अगर आप explore करते हो, जिसको अगर आप utilize करते हो, तो you can reap benefits. या तो वो threat लेकर आएगी. Threat मतलब it can impose harm on your business, चाहे आपकी profits पे या sales पे या market पे. So you have to identify कि ये जो environment में change हो रहा है, वो change हमारे लिए एक opportunity लेकर आ रहा है, मतलब एक उम्मीद लेकर आ रहा है grow करने की, या फिर it is bringing harm to us. So it is very essential to explore that कि जो change है, वो change एक opportunity लेकर आएगा या फिर it will bring a threat to the company. So identifying new opportunities and threats is very challenging. It is a very big challenge. Environment change होता है and the companies they do change. Okay. But as मैंने आपको पहले भी बताया था कि first mover advantage बहुत important होता है. जो कंपनी ने एक नई चीज बनाई है, पहली बार बनाई, उस कंपनी का नाम ज्यादा होगा as compared to the company जिसने उसको कॉपी करके दूसरी बार वो चीज बनाई है. So we always remember the first position. We never remember the other position, second, third, fourth, whatever. Okay. So first mover advantage आपको तभी आएगा जब आपने टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चेंज आने वाला है, ठीक है, इस चेंज से मुझे ये जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. लाइक जब कोविड-19 आया, सो एवरीथिंग वाज अंडर लॉकडाउन. सो इसमें क्या हुआ कि देयर हैव बीन एन अपॉर्चुनिटी फॉर द आईटी कंपनीज, बिकॉज़ आईटी कंपनीज के लिए देयर वाज no workplace required. They just need their hardware. They can also work at the convenience of their homes. So the IT professionals की demand बहुत बढ़ गई. So that means COVID-19, although it is a pandemic, but it brings in new opportunities for these IT professionals. New opportunities for these companies like Zoom, Google Meet, okay, Unacademy. So जैसे कि जो platforms हैं, Byju's, Unacademy, so ऐसे के platforms के लिए एक नई opportunity आई, because now everything is online. लोगों ने online ही अगर learn करना है at the convenience of their home or workplace, so it brings in new opportunities for the companies like these. जो ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स हैं, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. सो अगर उन्होंने टाइमली इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, सो दैट मींस दे विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल. सो टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज अ बिग चैलेंज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी टाइमली नहीं उसको यूटिलाइज करते हो तो उसका कोई यूज नहीं है. आई विल give you a very popular quote, nothing is as stale as yesterday's newspaper. कोई मुझे समझाएगा इसका क्या मतलब है? Nothing is as stale as yesterday's newspaper. Anyone who can explain the meaning of this quote? हाँ जी बच्चे. Okay, I will write here for your convenience. Nothing is as stale as yesterday's newspaper. What is meant by this statement? Anybody? क्या कुछ डिफिकल्ट इंग्लिश है? आपको मैं आज कल का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दूँ तो आपके काम का होगा? अगर मैं आज 7th मैं आपको कल का
सितंबर का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दूं, will that be useful to you? At least you can answer in yes or no. Yes, students, will that be useful to you? वो आपको कुछ आज के स्टेटस के बारे में बताएगा? No, No, ma'am. ma'am. So definitely that serves no purpose to you. न्यूज वही काम की है जो आपको ऑन द स्पॉट उसी दिन की उसी टाइम पे पता चले। अगर आप कल का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें डेफिनेटली उससे भी एक दिन पहले की न्यूज लिखी होती है, सो दैट इज ऑफ नो यूज टू यू। सो दैट मीन्स वो आपको कोई भी आपके जो है आप स्टॉक मार्केट में डील करते हो, फॉर एग्जांपल आप कल परसों के स्टॉक प्राइसेस देख रहे हो और आज आपने सेल परचेज करनी, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। सिंपली जो कल की न्यूज है वो आपके लिए आज यूजफुल नहीं रहेगी। आज नई न्यूज आ गई, उसमें फ्रेश डेवलपमेंट्स हो गई है, सो आज की आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल का नहीं है। सो दैट इज, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वो आप उसको यूज कर देते हो, ठीक है, तो वो आपको फिर वो किसी काम की नहीं रहती। उसको अगर आप टाइमली आइडेंटिफाई करके उसका एडवांटेज ले लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट इज ऑफ नो यूज टू यू। दीज आर अ फ्यू चैलेंजेस जो एक बिजनेस के सामने होते हैं जब वो अपने environment को स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं। So this is all about this chapter of introduction to business environment. So in this we have studied the meaning of business environment, features, importance, types and challenges. Any doubt to anyone? Yes, students, any doubt in this chapter?